Okay, question number 14 state whether each of the following elements below is true or false. Okay, so universal set is given to you, that is A, B, C, D, E, and A set is given to A, B, C, then A bar will be equal to D, E. Okay, so you will need to check this, that either this is wrong or right. Okay, so universal set, so first of all you will need to check that either all elements of set A is the element of universal set or not. So A, B, C, yes, A, B, C, yes, so ये तो आपका सही है. Then a bar means that u minus a, that is a bar. It means that all element of set u, which is not the element of set a. So a is the element of set a, so you will deduct this. B is the element of set a, you will deduct this. C is the element of set a, you will deduct this. So your a bar will be equal to D, E. This is your a bar. So yes, this is your true. Similarly, B, if A is the element of set A, yes, A is the element of set B, A, and A is the proper subset of B. Okay. In this case, A is the element of set A. Okay. If A is the element of set A and A is the proper subset of B, then A will be the element of set B. So first of all, you know what is meant by proper subset of B. Okay. First of all, you will need to find the subset of A. A का subset क्या आएगा? A का आपको ये आ जाएगा. Okay. A का आपका इसका A आ जाएगा. B, C. These are the proper subset of set A. Okay. So in this case, it is saying that A is the subset of B. So it means that your B will include A, B, C and other elements as well. A, B, C. Let's suppose मैं D को include कर लेता हूँ. So now A is the element of set A. Yes, A is the element of set A. ये satisfy हो गया. A is the proper subset of B. So A is the proper subset of B. Yes. B के subsets क्या आ रहे हैं? B के आपके सबसेट जो आएंगे वो इस B सेट्स के जो सबसेट्स आएंगे, ये मैंने अपने तरफ से एजम्पशन ले ली है B सबसेट. ओके, सो इसका एक सब एम्प्टी सबसेट आ जाएगा, एक इसका A आ जाएगा. दिस इज आल्सो द सबसेट ऑफ B and the proper subset of B as well. This is also the subset of B and proper subset of B as well. This is also the subset of C and proper subset of B as well. This is also the subset of B and proper subset of B as well. A, B, it is also the subset of B and proper subset of B as well. Similarly, B, C. Similarly, C, D. Okay. Similarly, ये भी हो गया. Then you will also write it like this. इसके subsets कितने बनेंगे? Like if you want to count that how many subset will be made, you will need to take the power of 2. कितना power? 1, 2, 3, 4. 4. 2 to the power of 4 is equal to 16. तो it means that 16 subset इस set के बनेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 तक हमने लिख लिए. अभी बाकी भी लिख लेते हैं. A, B भी हो गया. B, C भी हो गया. C, D भी हो गया. अब A, C को लिख लेते हैं. A, C लेते हैं. Then A, D. Then B, C, B, C हो गया यहाँ पे. B, D. Then C, D. C, D already हो गया. Okay, now you will write A, B, C. First one एलिमेंट्स हम लिख रहे थे, फिर 2 एलिमेंट्स आपने सारे पॉसिबल 2 एलिमेंट्स आपने लिखने हैं, फिर सारे पॉसिबल आपने 3 लिखने. सो A, B, C. उसके बाद A, B, C हो गया, फिर A, C, D हो जाएगा. उसके बाद फिर बस फिर उसके बाद B से स्टार्ट ले लो, B, C, D हो जाएगा.
उसके बाद बी ए डी ऑलरेडी हम यहाँ पे कर चुके हैं होंगे। नो बी ए डी ओके। नाउ ए सी डी ए सी डी ए डी डी ए बी हम ऑलरेडी कर चुके होंगे, डी ए बी कर दिए। ओके कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 आपके सबसेट हो गए। ओके इससे so like if you want to find that, if the question is find the subset of B, so what you will do, you will need to write 2 and the power will be the, you will need to count the number of elements 1 2 3 4 4 elements, so that should give you 16. So it means that this set will have 16 subsets. ओके तो ये भी हो जाएगा। फिर आपने इस तरह काउंट करना है और अगर 15 बन रहे हो तो फिर आपने ढूंढना है कि एक सबसेट आप मिस कर रही हो तो वो कौन सा है। तो लाइक दिस विल गिव यू द आइडिया ऑफ टोटल सबसेट्स। ओके सो ये सारे सबसेट्स हैं इस बी सबसेट के। सो यहाँ पे क्या कहना है कि ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए बी सी है यहाँ पे, ए बी सी, यस ए बी सी है। सो दिस इज योर ए सेट and yes, A is also the proper subset of B because A element of all element of set A is the element of set B, and the number of element in set A is not equal to the number of element in set B. That is the condition. The condition for a proper subset is that all element of set A will be the element of set B. This is one condition for a proper subset. For second condition is number of element of set A will not be equal to the element of set B. Okay, this is also the condition. So in this case, A, B, C, all element of set A is the element of set B, and the number of element in set A is not equal to number of element in set B. So now you can say that A is also the proper subset of B. Okay, so ये condition भी satisfy होगा. Now then you will check that ये दोनों condition मैंने satisfy कर लिए. Now I will check this, either A is the element of set B or not. So yes, A is also the element of set B. Okay, this is my set B. A is also the element of set B. Okay, so this will be true. Okay, part C की तरफ आ जाते हैं. In part C, if A is the subset of B and B is the, sorry, A is the proper subset of B and B is the proper subset of C, then A will be the proper subset of C. Okay, set A is given to me. Okay, and first of all I will need to make B. आपने B को इस तरह बनाना है so that it will satisfy this condition. A is the proper subset of B. So proper subset means कि it will include all element of set A, and proper subset definition अभी मैंने आपको few minutes पहले लिख दिया कि it will all element of set A will be the element of set B, and the element of set and the S set A will not be equal to the set B. Okay, so अगर इसको मैं B set कह दूँ, so this will not be the proper subset of A. Okay, like A will not be proper subset of B क्योंकि all element of set A is the element of set B. इस first condition को satisfy कर रहा है, but this is not satisfying the second condition because in second condition all element of set A will not be equal to the all elements of set B. But in this case, all element of set A is equal to all elements of set B. So for making this proper subset, I will add another alphabet from universal set, that is D. Okay. So this is my set B. Okay, and A is, yes, A is the proper subset of B. ये condition satisfy हो गया.
Now I am going to make C set. C set saying that B is the proper subset of C. So first condition is that all element of set B will be the element of set C. So all element of set B will be the element of set C. I will write all element of set B inside set C. Now B is the proper subset of C, and the second condition for a proper subset is that A will not, in this case, B will not be equal to C. So now B is equal to C. यहाँ पे B is equal to C. So I will add another alphabet from the universal set. A भी हो गया, B भी हो गया, C भी हो गया, D भी हो गया. Now I will add E as well. So now this is my set C. Okay. This set C is also satisfying this condition. Now I will check that either A is the proper subset of C or not. So A is the proper subset of C as well, okay? Because proper subset का first condition क्या है कि all element of set A will be the element of set B. So all element of set A is also the element of set C. And second condition for proper subset is that number of element in set A will not be equal to the number of element in set C. In set A we have A, B, C. And set C we have A, B, C, D, E. Yes, it's also satisfying this second condition for a proper subset. So yes, this is also true. Now part D. If A is the element of set A, yes, A is the element of set A. And A is the element of set B. Okay, I will also write the B set. Let's suppose B set is A, B, C. Yeah, A, B. Okay, this is my second. So yes, B is also the element, A is also the element of set B. Then A will be equal to B? No. In equal के conditions क्या हैं कि अल्फाबेट भी सेम होने चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए. इक्वल के लिए कंडीशन क्या है कि अल्फाबेट्स सारे अल्फाबेट सेम होने चाहिए या सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए. अल्फाबेट या यू कैन से एलिमेंट्स वो सेम होने चाहिए. दिस इज फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी. सो यहाँ पे मैंने सेट बी ले लीजिए ए बी. सो A is the element of set A, like this set also include A, okay, but it is not necessary that number of element in set A will be equal to the number of element in set B. If it is given to you like this, A is the element of set A, B is the element of set A, C is the element of set A, and A is also the element of set B, B is also the element of set C, set B, C is also the element of set D. Then it will also not true, okay? क्योंकि B set मुझे given नहीं है. If I take B set like this, if I say that this is my B set, then A is the element of set A, set B, B is also the element of set B, C is also the element of set B, but D is not the D is the element of set B, but D is not the element of set A. So this is not satisfying. Okay, ये condition satisfy नहीं हो रहा. So that's why this is not true. This is false. If you have any question in, especially in part D, then you can ask. Okay. Part E. Empty set is equal to the A bar. A bar means all element of set A which is not the element of set. All element of set U which is not the element of set A. This is my A bar. But it is given to you that let's suppose A bar is equal to empty set. Like
there is no element of set U which is the element of set A. Okay, like it will be equal to empty set, और you यहाँ पे आप इस तरह ये भी लिख सकते हो, like you will use this alphabet that's equal to this, and it will only be possible, this condition will only be possible if your this is epsilon is equal to ABC. If epsilon is equal to ABC, then epsilon minus A will be equal to A bar. So it means that in this set you will write that element of epsilon which is not the element of set A. So in this case ABC is the element of epsilon which is also the element of set A. So यहाँ पे कोई different element नहीं है जो आप यहाँ पे लिख लो. So in this case your A bar will be equal to empty set. So let's suppose my epsilon is this one. Then A will be equal to this. So then A will be equal to this. So for equal set, what you will do, all alphabet of set A will be equal to the alphabet of set epsilon. So yes, all alphabet of set A is also the element of set epsilon. Second condition is number of element in set A will be equal to number of element in set epsilon. So 1, 2, 3, yes, 1, 2, 3, yes. So this is true. Okay. First of all, you will need to make the conditions. First of all, you will need to make the conditions. Then you will check that either that is right or not. Okay, यहाँ पे देख लो. तो epsilon को मैंने ये condition को first of all I satisfy this condition. Like A bar is equal to empty, and it will only be possible A bar will be equal to empty set if your epsilon is equal to this one. Okay, in this case this will not be your empty set. Okay, यहाँ पे देख लो तो आपका A bar जो है that's equal to epsilon minus A, that will be equal to the element of set epsilon which is not the element of set A. तो A B C D E यहाँ पे हो जाएगा. Okay, in this case A bar will be equal to D E, but in this case your like this will A bar will be equal to empty set if your epsilon is this one. Okay, तो फिर आपने ये कंडीशन को चेक करना है. Okay, got it? Yes. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 को किया था आपने या नहीं? Yes. Yeah, easy. Okay, अच्छा, if you want to find it how many subset you will have, तो आपने बस 2 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 लिखना है. तो यहाँ पे 4 सबसेट्स आपके इसके बनेंगे. ओके ओके, इसका एक एम्प्टी हो जाएगा, एक आपका 1 हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, फिर आपका 1 2 हो जाएगा. ओके, तो 4 सबसेट्स आपके बन गए. अच्छा, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स. ओके, so intersection means same elements of set A. If same element of set A is also like आपने same elements को pick करना है. A intersection B means कि you will write that element over here. If that is, this element will be this element of set A and this element will be this element of set B. Okay, same elements आपने pick करने. So hopefully you will do this type of question. I will give you an example. Like let's suppose my A set is equal to 1 2 3 4 5. My B set is equal to 4 5 6 7 8. So A union B, it means that in union you will write all elements. Okay, but no repetition. You will write 1, you will write 2, you will write 3, you will write 4, you will write 5, then you will come toward the B set. B in B set 4 I already write it, 5 I already write it, 6 7 8. So this is my A union B. Now if you want to find A intersection B, so what you will do, you will write the same elements
4, yes, 4 is also present over here. 5, yes, 5 is also present over here. So this is my A intersection B, okay? अच्छा, in Venn diagram, how you will represent these two? अच्छा, इसका यूनिवर्सल सेट क्या बन जाएगा रानिया? Yeah. Okay, universal set means के सारे element of set A and all element of set B. You will need to write in universal set. Okay, if the question is set A is given to you, set B is given to you, find the universal set. So what you will do? You will write all the elements like A union B. आपने यहाँ पे लिखना है 1, 2, 3, 4, 5. This is universal set. Okay, it will include all elements. Okay, if C set is given to you and that the element of C set is 10, 12, 14, then you will also include that over here. Okay, so this will be your universal set for set A, B, and C. Okay, let's suppose this is your universal set. Okay, so in Venn diagram, how you will write? You will need to draw the rectangle like this. Over here, you will write U or epsilon. Then you will write two circles like this. Then this will be my A circle, this will be my B circle. So over here I will write 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 common A. So you write 4, 5, 6, 7, 8. Okay, this will be your universal set in Venn diagram. Okay, this is your Venn diagram representation. If this Venn diagram is given to you and the question is find the union set, तो आपने बस सिंपल क्या लिखना है A union B. और यहाँ पे जो कॉमन होगा ये कॉमन रीजन है तो 4, 5 बस आपने यहाँ से वो एलिमेंट्स पिक करना है और लिखने दिस इज फॉर इंटरसेक्शन इफ द क्वेश्चन इज फाइंड द ए यूनियन बी देन यू विल राइट ऑल एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट होगा 9 तो वो आपने नहीं लिखना बिकॉज दैट नॉट कम इन ए यूनियन बी ओके सो दिस विल बी ए यूनियन बी In Venn diagram, you will represent all these over like this. Okay. Combination, inverse set, complement of a set, subset combination. Okay, A union B, then complement. Complement is on A union B. Complement is on A union B. So first of all, you will need to find the A union B. Then you will take the complements. Okay. Next. Okay, so first of all you will need to find the A union B, then you will need to find the complement. Okay, तो A union B से आपके पास एक set आ जाएगा, then you will need to find the complement. That should be like this, like it will be the element of universal set which is not the element of A union B. Okay, इसमें जो elements होंगे वो आपने यहाँ पे नहीं लिखने क्योंकि वो आपने subtract कर दिए हैं. Okay, यू के वो एलिमेंट्स आपने लिखने हैं यहाँ पे जो यहाँ पे ना हो. ओके, सो दिस इज योर यू, दिस इज योर ए यूनियन बी होल बार विच इज यू माइनस ए यूनियन बी. ओके, सो कंफ्यूज नहीं होना इस टाइप के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में. अच्छा, इन दिस केस दिस इज ए इंटरसेक्शन बी बार. सो इन दिस केस फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नीड टू फाइंड बी बार विच इज यू माइनस बी. So it means that you will write all element of set U which is not the element of set B. You will write that over here. That should be your B bar. Then you will find the common element in set A and in this set. That should be your A intersection B bar. Okay. A intersection B bar means the common element of set A and the common element of set B bar. Okay. Not just B. This is B bar. First of all, you need to find B bar. So I have a question. Yes. Is A union B whole bar the same as A bar union B bar? Yes, good question. A union B bar will be equal to A bar union B bar.
Yeah. Okay, so if this is if the question is like this, okay, then what you will do, the easiest way to check this equality is by using some sets. Okay, let's suppose my universal set is 1 2 3 4 5. Close करते हैं button हो गया. Okay, so if your universal set is 1 2 3 4 5, and let's suppose A set that is 1 2 3, and B set is, let's suppose that is 3 4 5. Okay, ये आपके sets हैं. Okay, so A union B will be equal to 1 2 3 4 5. इन एलिमेंट्स को आप याद कर लो रानिया, और ये एलिमेंट्स आपने सारे सेट्स में अप्लाई करना है. ओके, अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो बस आपने ये लेने हैं 1 2 3 4 5. दिस विल बी 1 2 3, दिस विल बी 4 3 4 5. ओके, अच्छा, A union B will be this one, A 1 2 3 4 5. Now A union B bar will be equal to U minus A union B, which is equal to A union B bar. So all element of set U which is not the element of set A and not the element of set B, तो वो क्या है? 1, like इस set को check कर लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. So this will be your empty set. Okay, now let's check this. First of all, in this case, first of all, you will need to find A bar. A bar is U minus A. So all element of set U which is not the element of set A. So 1 no, 2 no, 3 no, 4 5 हो जाएगा. B bar, all element of set U which is not the element of set B. So 1 2 हो जाएगा. Now you will need to find the union of A bar and B bar. So union of A bar, union B bar will be equal to 1 2 4 5, 1 2 4 5. So this is not equal to the A union B whole bar will not be equal to A bar union B bar. What about A bar intersection B bar? So common element है यहाँ पे? No, there is no common element. So this is empty set. So you can write it like this. A union B whole bar will be equal to A bar intersection B bar. Okay, A union B whole bar will be equal to A bar intersection B bar. Okay, if you remember this then it's okay. लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए और वहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप ये सेट्स याद कर लो. यूनिवर्सल सेट आपने ये लेने, A सेट आपने ये लेने, B सेट आपने ये लेने. ओके, देन यू विल चेक दिस इक्वलिटी स्टेप बाय स्टेप. ओके, जिस तरह हमने यहाँ पे चेक कर लिया. गॉट इट? Yeah. Any other question? No. अच्छा, exercise 14C. It is given, universal set is given to draw the Venn diagram to illustrate the set. So hopefully you will do ये Venn diagram किस तरह draw करने. Hopefully you will do these questions. Okay, this is given to you and the question find A union B. तो you will write all element of set A and all element of set B. But common को repeat नहीं करना. ओके, क्योंकि set में आपने repetition नहीं लाना. Like A union B आपका क्या हो जाएगा? Dorian, mango, pineapple. Then you will come toward B. Dorian, I already write it over. You will not write Dorian over again. Okay, क्योंकि if you write it again, then there is repetition. तो टीचर आपको ये 0 मार्क्स देगी क्योंकि आपने repetition लाया. In set there is no repetition. Set के दो कंडीशन है. Well defined elements. Second condition is and distant element. Okay, so ये दो कंडीशन है सेट.
So already written, this is not, so you write this in union. Mango is already written, so this is your A union B. A intersection B क्या हो जाएगा? Common elements. Dorian, yes. Mango, yes. Okay, this is your A intersection B. So इतना मुश्किल नहीं है. Hopefully you will do this type of this. Now let's do question number 19. Identify and shade the following region on separate Venn diagram. So this Venn diagram is given to you. You will need to find this. So for this, first of all, you will need to shade Q bar. Okay, Q bar shade कर लो. Q bar आपका क्या हो जाएगा? Q bar means U minus Q. That is Q bar. So it means that except Q, you will write all. You will shade all everything. Okay, this is your Q bar means all area of universal set which is not the area of Q. So all area of universal set which is not the area of Q. Okay, so I shaded that again. Now this is my Q bar. Now I will use different color. P union Q bar. So this is my P. So P union Q bar. So it means that you will write P, okay, all elements of P and all elements of Q bar. So first of all elements of Q bar आपको क्या हो जाएंगे? ये सारा आपके Q bar हो जाएंगे. All elements of Q bar. This is all elements of Q bar. Now Q is inside P, so you will also write all element of P. So इसमें ये भी आ जाएगा. Okay, Q is inside P. यहाँ पे आप देख लो. Q is inside P. So all element of P भी आपने लिखने. This is union. So in union you will write all element of Q bar and all element of P. तो P में यहाँ पे भी limits होंगे, यहाँ पे भी limits होंगे, यहाँ पे भी limits होंगे. तो वो सारे आपने इसमें include करने. Okay, got it? In P intersection इसको कर लेते हैं. This is your Q bar. This is your Q bar. Now P intersection Q bar. You will need to find the common region of P and common region of Q bar. So यहाँ पे देख लो, this is common. This is P. This area is for P and this area is also same for Q bar. So this is your P intersection Q bar. Okay. Now this one, in this case, P union Q whole universal set. So first of all, this will be like P union Q bar. It means that universal set minus P union Q. अच्छा, यहाँ पे ये U नहीं यूज़ कर रहे हैं, just to clear the confusion in between union and this. Okay, तो इसी वजह से ये एप्सिलॉन यहाँ पे आपके बुक में मैंने यूज़ किया हुआ. So you will also use this. Okay, this means that universal set. इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस वजह से यूनिवर्सल सेट माइनस पी माइनस यूनियन क्यू, दैट इज योर पी यूनियन क्यू बार. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड दिस. सो पी यूनियन क्यू आपका ये क्या हो जाएगा? पी यूनियन क्यू आपका ये ऑल एलिमेंट ऑफ पी एंड ऑल एलिमेंट ऑफ क्यू. नाउ यू माइनस ये एरिया, it means that unit which is not this area. Okay, so it means the P unit Q bar will be this area. This is your final answer, the red one. This area is your
P यूनियन क्यू बार, ओके, U minus P यूनियन क्यू एरिया आपने निकालना है इसे, so this will be your P union Q bar, okay. Any confusion? No confusion? Okay, last part. First of all, you will need to find Q bar, okay. In this case, P union Q bar whole is, in this case, first of all, you need to find Q bar, which is equal to U minus Q. So उसको शेड कर लो, एप्सिलॉन यूज कर लो यहाँ पे. So first of all, we need to shade that region. This is your Q bar, okay. Then P union Q bar, P union Q bar will be your this region, like सारा हो जाएगा, क्योंकि this is union तो सारा हो जाएगा, all element of Q bar and all element of P, so ये तो सारा हो जाएगा. Then you will subtract U minus like P union Q bar, that is your P union Q bar whole bar, okay. So subtract कर लो तो आपका क्या हो जाएगा, कोई shaded region नहीं होगा, okay. Shaded from shaded will give you nothing, okay. So this will be the final answer. इसका आंसर यही होगा बस. Got it? Yeah, बाकी questions को भी आप कर लो, hopefully it will clear to you. Now let's come toward the next exercise. That is probability of single events, okay. This is related to probability, okay. अच्छा, प्रोबेबिलिटी में हमारे पास दो कंडीशंस होते हैं, या तो नथिंग या दैट्स विल बी सर्टेन टू यू, ओके. लाइक दैट्स लाइक आपको फुल लाइक दैट्स विल क्लियर टू यू, 100% क्लियर टू यू, ओके. सो दैट इज सर्टेन, so the probability that will be 100%, okay. Or you can write in percentage that will be 100%. In simple natural number that will be equal to 1, okay. 100% is equal to 1, okay. 100%, cent means 100, तो इसको आपने कन्वर्ट करने सिंपल डेसिमल में, सिंपल होल नंबर में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दैट्स विल बी 1, ओके. सो दैट्स विल बी आइदर जीरो, इम्पॉसिबल, दैट्स विल बी आइदर सर्टेन, ओके. अगर if the situation is like that, that is in between 0 and 1, and if that is greater than 0.5, then you will say that that is more probable, okay. Like that will be hopefully that's will occur, okay. Like you will say like this. But if that is less than 0.5, then you will say that no, that's maybe impossible, okay. Not sure, but that's maybe impossible, okay. We will write that. Acha, if you want to find the probability, you will represent that by P, okay. That is the number of outcome divided by total. तो in this case total कितने possibilities हैं, 2 हैं. So you will write 2 over here, और यहाँ पे आपके पास after tossing you will get 1 result, so you write 1. So the probability in this case will be equal to 0.5. Like in this case, if you throw this coin, then the chances will be 50-50%, okay. For you, if you want to tossing a coin in between A and B, then the chance for A will be equal to 50% and the chance for B will be equal to 50%, okay. Achha, in this case, the total will be equal to 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, so you write 6 over here. अच्छा, आपके पास क्या आ रहे हैं यहाँ पे, तो वो आपने 1 लिखने हैं, तो 1 रिजल्ट आ रहे हैं आउट ऑफ 6, सो यू राइट 1 डिवाइड बाई 6, दैट्स विल बी योर probability of this. In this case 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, you write 10 over here, और रिजल्ट्स कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 4 आ रहे हैं, तो 4 आपने ऊपर लिखने हैं, तो 4 डिवाइड बाई 10 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस. तो इतना मुश्किल नहीं है, होपफुली ये वही है जो अभी मैं फ्यू मिनट्स पहले रिपीट कर चुका हूँ.
if probability of event E is equal to 0, so it means that 0%, okay? So it means that that will be impossible event. It will never occur, okay? But if the probability of event E is equal to 1 or 100%, so you will say that will certain event, okay? It will definitely occur, okay? But if that is in between 1 and 2, then that may be occur or not, okay? Well, Acha, in this type of question, you should also remember the cards, okay? You should have knowledge of cards, okay? So black cards, so you should like out of 52 cards, total cards is 52. 26 will be your black cards, okay? And this is standard, okay? ये चेंज नहीं होंगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन दे दें तो उसमें 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, 2 रेड एक्स होते हैं, ओके? 13 डायमंड्स होते हैं, ओके? So you should remember these as well, okay? Achha, this formula is given to you. It is actually nothing but the, if I say that you have 70% chances, yeah, you have 80% chances to clear this exam. If I say that you have 80% chances to clear this exam, then how many percent of chances you have so that you will not clear the exam? 20. Yeah, 20. Okay, so this is nothing just that वो है कि आपने 100% से जो सर्टन है आपको वो आपने सब्ट्रैक्ट करना है, सो यू विल गेट दी दैट अमाउंट विच इज नॉट सर्टन, ओके? सो नॉट नॉट ई इट मीन्स दैट आपको ये वो अमाउंट है जो नॉट सर्टन. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट इन परसेंटेज, बट उन्होंने सिंपल होल नंबर में उन्होंने लिखे हैं, ओके? लाइक इसको भी आप होल नंबर में लिख सकते हो. 100% इज नथिंग जस्ट 100 डिवाइड बाई 100, दैट इज 1. 80% इज 80 डिवाइड बाई 100 विच इज 0.8. 20% इज 20 divided by 100 which is 0.2, okay? So वो उन्होंने उसी फॉर्म में लिखे, बट यू कैन राइट इट इन परसेंटेज. बट इक्वलिटी में अगर आप यहाँ पे सारे परसेंटेज लिख रहे हो तो यहाँ पे भी आपने सारे परसेंटेज लिखने हैं. लाइक इन दिस केस राइट 100 minus 80% is equal to 20%. This is 100 minus 20% will not be equal to 0.2%, okay? ये मिस्टेक नहीं करना कि कुछ को आप होल नंबर में लिख लो या कुछ को आप डेसिमल में लिख लो, कुछ को आप फ्रैक्शन में लिख लो, सबको सेम रखने हैं. परसेंटेज में लिखते हैं या होल नंबर में लिखते हैं, डेसिमल में लिखते हैं, सबको आपने उसी तरह लिखना है. अच्छा, in this case, question number 1, a dot board is divided into 6 equal sector. When a dot lands on it, the number of sectors on which it lands is noted. Write down the sample space and state the total number of possible outcomes, okay? So in this case, you will need to find the total number of possible outcomes. 6 सेक्टर्स में यहाँ पे हमें डिवाइड किया गया है. ओके, इट इज जस्ट लाइक लूडो, ओके? वो जो हमारे पास इन दिस केस यू विल गेट वन आउटकम, ओके? जो आप यहाँ पे वो फेंकोगी वो एरोस, तो वो आपको यहाँ पे एक पे आ गया. ऐसा नहीं होगी यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा. सो दैट्स विल गिव यू वन आउटकम, ओके? And the total number of outcome is 1 2 3 4 5 6. So this will be the final answer, okay? 1 divided by 6, that will be the possible outcome.
Okay, like in this case you have 1 divided by 6. Like this is the probability, this will give you the probability of hitting the uh, hitting a part of it. Okay, 6 parts is given to you, so the probability of hitting one part will be 1 divided by 6. Okay, For each of the following experiments, write down the sample space and state the total number of possible outcomes. Tossing a fair tetrahedral die with faces labeled 2, 3, 4, and 5 respectively. अच्छा यहाँ पे इन्होंने ये भी लिखे है, वेट राइट डाउन दी सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में आपने क्या लिखना है, 1 2 3 4 5 6, this will be your sample space. Okay, like you will write all the possible outcomes. Okay, like if you throw an arrow, so यहाँ पे आपका 6 पे भी आ सकता है, 1 पे भी आ सकते हैं, 2 पे भी आ सकते हैं, 3 पे भी आ सकते हैं, 4 पे भी आ सकते हैं, 6 पे 5 पे भी आ सकते हैं। तो these are your sample space. Okay, and the total number of possible outcomes क्या आएंगे, वो 1 आएंगे, 1 out of 6 आएगा. So this will be your probability, 1 out of 6. Okay, question number 2. For each of the following experiments, write down the sample space and set the total number of possible outcomes. Tossing a fair tetrahedral die with face labeled 2, 3, 4, and 5. Okay, तो टेट्राहेड्रल मीन्स के 4 साइड्स होंगे उसके, तो वो स्पेस पे क्या क्या लेबल है, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये आपके सैंपल स्पेस हो गए, लाइक दिस विल बी सैंपल स्पेस। ओके, एंड देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएगा, दैट्स विल गिव यू 1 नंबर। ओके, जैसे आप थ्रो करोगे तो आपके पास वो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा। तो 1 पॉसिबल आउटकम्स आउट ऑफ हाउ मेनी आउटकम यू हैव, 1 2 3 4। So this is the number of possible outcomes. Okay, so इसी तरह बाकी भी हैं, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, in this case drawing a disc at random from a bag containing 5 identical red discs, 3 identical blue discs, and 2 identical green discs. So in this case number of possible outcomes क्या हो जाएंगे, red 5 है, 1 2 3 4 5, फिर ब्लू आइडेंटिकल, फिर 2 ग्रीन, ओके। तो so drawing a desk, it means that you will draw 1 desk. Okay, so 1 out of 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, this will be the probability. Okay, in this case you write all the sample space, वो आपका क्या हो जाएगा, TEACHER हो जाएगा। ओके, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। सो सेम एलिमेंट्स कितने हैं, वो 1 2 है, और कोई सेम एलिमेंट्स नहीं है इसमें। सो यू विल राइट इट लाइक दिस। ओके, 2 डिवाइड बाय 7, दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी। इसमें इतना मुश्किल नहीं है, बस ऊपर आपने लाइक योर डिजायर्ड रिजल्ट्स डिवाइड बाय टोटल रिजल्ट्स आपने लिखने हैं। ओके, ये सारे इजी हैं, लाइक आपने ऊपर डिजायर्ड रिजल्ट डिवाइड बाय टोटल रिजल्ट। अच्छा, फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू शुड रिमेंबर दी लाइक एक्स, और ये सारे आपने वो याद रखते हैं। ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, वो उसके थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। अच्छा, टोटल कितने पीपल्स हैं, 30 पीपल्स हैं। ओके, लाइक 9 + 6 + 12 + 3 विल गिव यू 30। ओके, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्सन फॉर मेल। तो मेल कितने हैं इसमें, मेल कितने हैं, 9 + 12,
that is male, okay. 19 out of 30, this will be the probability, okay. Easy, either a woman, a boy or a girl. So in this case your probability will be either a woman, तो woman को भी आपने encounter करना है और boy को भी काउंट करना है, girl को भी. तो 12 plus 6 will give you 18, 21 out of 30. This will give you the probability. A box contains 2 dozen pairs of contact lenses. Okay, 2 dozen means के 2 times 12. So it means के total 24 pairs of contact lenses, out of which 8 pairs are tinted. So you need to find the probability that is not tinted. So probability for not tinted, that will be equal to not tinted. कितने थे? ऊपर आपने डिजाइन लिखने, नीचे आपने टोटल लिखने. टोटल आउट ऑफ 24 8 tinted थे और बाकी जो रह जाते हैं that will be like 16. तो 16 divided by 24, that will give you the final answer. Okay. If the question is find the probability of tinted, तो फिर आपने यहाँ पे 8 लिखने हैं. डिजायर आउटपुट आपके 8 आएगा divided by total, that is 24. So इतना मुश्किल नहीं है. Hopefully you will be able to solve this type of question. और ये हम पहले कर चुके हैं, ये probability का स्पेशली, ये उसी तरह जो अभी हम क्वेश्चन कर चुके हैं. ओके, इसको आप कर लो. इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन तो मैं अप टू 12 PM तक हूँ. लाइक यू कैन ईमेल मी एनी टाइम, ओके, और इन द मॉर्निंग you can email me. I will be online and we will discuss that specific question. Okay. Acha, if this is given to you and the question is find the probability of red sector, so it means that you will just need to find the percentage. Okay, जिस तरह हम पहले कर चुके थे. तो परसेंटेज किस तरह फाइंड करने हैं? लाइक ऊपर आपने डिज़ायर लेना है. ऊपर आपका लेट सपोज you need to find the probability of for blue. So what you will do, probability इसका कितना है ये आपने फाइंड करने डिग्री में और डिवाइड बाय टोटल. टोटल कितना हो जाएगा? वो टोटल आपको ये 360 बन रहा है. तो नीचे आपने टोटल लिखने, ऊपर आपने डिज़ायर लिखने. तो ये कितना है ये हम फाइंड करेंगे. दिस विल बी 360 will be equal to blue angle plus 90 for yellow plus 135 for red plus 45 for white plus 30 for green. ओके, तो इसको कर लो तो इससे आपके पास ब्लू आ जाएगा. 360 माइनस 90 माइनस 135 माइनस 45 माइनस 30 कर लो तो इससे आपके पास ब्लू आ जाएगा. वो ब्लू आपने यहाँ पे लिखना है. सो दैट्स विल गिव यू द प्रोबेबिलिटी. ओके, फ्रैक्शन में आएगा. सो इतना मुश्किल नहीं है. होपफुली ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी हैं. ओके, a regular octagon is divided into 4 regions where O is its center. A point is selected at random in the octagon. Find the probability that the point lies in region R. So it means that you will need to find this region out of total region. Okay. So this is octagon. Okay. So in this case you will need to divide. Angle is not given to you. If angle is given to you तो वो तो काफ़ी easy है. If this angle is given to you तो आपने क्या करना है? टोटल एंगल लेना है, वो आपने नीचे लिखना है और ऊपर आपने 30 डिग्री लेना है. सो दैट्स विल गिव यू दी आर प्रोबेबिलिटी. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर. बट इन दिस केस एंगल इज नॉट गिवन टू यू. सो हाउ यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? आपको मेरा आवाज़ क्लियर आ रही है रानिया? जी. Okay, so how you will need to divide all these in equal parts. Okay, this is a octagon, so ये आपके equal parts में इस तरह divide करना है. Okay, now you have all equal area. Okay, now in probability for region R, what you will do, नीचे आपने total लिखने हैं. कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. रेड कितना कवर कर रहे हैं? 1 कर रहे हैं. सो 1 डिवाइड बाई 8 विल बी द आंसर ऑफ फर्स्ट दिस. फॉर एस के लिए एस टोटल कितने? 8 है. एस कितना कवर कर रहे हैं? एस आपका 2 रीजन्स कवर कर रहे हैं.
तो 2 डिवाइड बाई 8 दैट्स विल गिव यू द प्रोबेबिलिटी। ओके, यहाँ पे देख लो S2 कवर करे 2, नो, S is covering 3 parts। ओके, एक ये 1 2 3 फॉर रीजन P और Q। P और Q मीन्स के P और Q दोनों को, तो P कितने करो 1 2 3 4, तो 4 डिवाइड बाई 8, तो इससे आपके पास 0.5 आ रहे हैं। तो 0.5 मीन्स के 50% चांसेस हैं इसके। तो ये देख लो, ये वैसे भी हाफ है, 50% इस रीजन के चांसेस हैं यस, कि आपका जो एरो होगा वो यहाँ पे आएगा यस 50, क्योंकि ये हाफ है, हाफ ये है और हाफ ये है, तो 50% चांसेस इसके बन रहे हैं। Hopefully you understand that how you find these type of questions। okay, इतना मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने घबराना नहीं है, बस आपने थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है, and hopefully you will do this type of question, but you will practice this all these question. If still you have any confusion, then you can email me, I will check my email। okay, after 1 hour I will check my emails। so if you have any confusion, then we will discuss that confusion in any like class, किसी भी वक्त हम कर सकते हैं। ओके, या सो प्रैक्टिस कर लो, होपफुली हो जाएगा आपको। अच्छा, चैप्टर 12 में क्या कंफ्यूजन था आपको? I had confusion in the questions about the shapes melting and the capacity of tank. Like, can you repeat your question? 1 minute, I'll find the question in the book. Okay, two question. Question number 12. On which page? This is 12A. Question exercise was the question 9. Exercise 12C, question 9. Question 9. Question 10. Question 10. Yeah. Question 9, 10 both, right? Yeah. Okay. Question number 9. Four-sided solid hemisphere, each of diameter 2 centimeter, are melted to form a single sphere. Find the radius of the sphere. ये आई थिंक हम कर चुके थे पहले भी। So first of all, you will need to draw the hemisphere, okay? And this hemisphere have 4 sides, okay? Sorry, 54 hemisphere, no, not 4 sides. This is your hemisphere, okay? And you have 54 such like hemisphere, okay? Each of diameter 2 centimeter. 2 centimeter is the diameter of this hemisphere, are melted to form a single sphere. So you need to find the volume of this hemisphere, okay? So formula क्या था volume का? This is the formula for finding the volume of the sphere, right? Yes. Yeah, so for hemisphere, this will be divided by 2 करना है आपने. So this will be 2 divided by 3 pi r cube. So in this case, your volume, that will be equal to 2 divided by 3, pi is 3.14, r value will be equal to 2 divided by diameter को like this will be 2, 1 हो जाएगा, 1 cube, okay? 2 centimeter is the diameter, so radius will be equal to 1 centimeter. सो इसको आप सॉल्व कर लो, सो इससे आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वन हेमिस्फेयर फॉर 54 हेमिस्फेयर। सो वॉल्यूम ऑफ 54 हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा? दैट्स विल इक्वल टू 54 टाइम्स दिस वॉल्यूम, तो वो आपके पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा फिर।
गॉट इट? यहाँ तक समझ आ गया? Yes. Now from all this material, you will need to form one sphere. Okay, so what you will do, you will utilize all this volume, okay, for one sphere. Okay, you need to make one sphere, not hemisphere. Okay, you need to make one sphere. So volume of sphere किसकी इक्वल होता है 4/3 pi r cube. So over here you will write this volume, total volume जो यहाँ से आ गया था वो आपने यहाँ पे लिखना है, and then you will write 4/3, pi value will go to 3.14 r cube. So you need to find r. ओके, इससे आपके पास r आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, वो आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी, वो आपने फिर क्यूब रूट लेना है. सो होपफुली यू विल डू दिस क्वेश्चन. तो इससे आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी. सो फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर. सो दिस विल बी द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर. गॉट इट? Yeah. कंफ्यूजन कहाँ पे हो रहा था आपको? Like, I think this will confuse, that either you will take surface area or either you will take volume. You will take volume for this type of question. Okay, क्योंकि you need to find the capacity. Capacity means कि you need to find the all materials, and you can find all materials by using this terminology volume. Okay, got it? Yeah. अच्छा, similarly in this case, a sphere of diameter इतना is half filled with acid. The acid is drained into cylindrical beaker of diameter इतना. Find the depth of the acid in the beaker. Okay. अच्छा, उससे स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ताकि आपको कंफ्यूजन होता लेटर ऑन यू विल चेक दैट ओवर हियर. स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो. वी हैव ओनली 4 minutes. I took it. ले लिया? Yeah. ओके, क्वेश्चन नंबर 10. स्फीयर ऑफ डायमीटर इतना. ओके, स्फीयर का फार्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल इक्वल टू 4/3 pi r cube. सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा? 4/3. pi value is 3.14. r value will be equal to 26.4 डिवाइड बाई 2. इससे आपके पास आ जाएगा 13.2 सेंटीमीटर. तो इससे आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा. इट्स हाफ फिल्ड विद एसिड. तो इसको आपने डिवाइड बाई 2 भी करना है, क्योंकि दैट इज हाफ फिल्ड. लाइक दिस इज फेयर. ओके, इट इज हाफ फिल्ड विद एसिड. सो इफ यू वांट टू फाइंड दिस वॉल्यूम, यू विल नीड टू डिवाइड इट बाई 2. सो इससे वॉल्यूम ऑफ एसिड क्या आ जाएगा? दैट्स विल बी टू 2/3. ये आ जाएगा. ओके, दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ द एसिड. नाउ यू विल नीड टू ड्रेन दिस एसिड into a cylindrical. You need to drain this acid into this cylinder. Okay, and it will cover some volume. Okay, in cylinder it will cover some volume, and the diameter of cylinder is given to you, that is 16 centimeter. This diameter is given to you, that is 16 centimeter. So it will cover some volume with height h. So the question is, you will need to find this h. So over here you will need to utilize the volume of the formula for finding the volume of the cylinder. So volume of cylinder क्या हो जाएगा? That will be equal to pi r square h. Okay, that will be pi r square h. Surface area क्या होगा? 2 pi r h. Okay, surface area का फॉर्मूला 2 pi r h होता है, एंड वॉल्यूम का पाई r square h. सो ओवर हेयर वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ये कितना वॉल्यूम है? इस एसिड का वॉल्यूम कितना है? दैट्स विल बी इक्वल टू दिस वन. ओके, ये आपने यहाँ पे पुट करना है. पाई विल बी इक्वल टू 3.14. r वैल्यू विल बी इक्वल टू diameter of this cylinder, that will be equal to 8 in this case, and you need to find h. So यहाँ से आपके पास h वैल्यू आ जाएगी in centimeter. Got it? Yeah.